Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So today we are going to give our reaction on Pathaan conversation with Shahrukh Khan. Yes. King Khan. Yeah, तो पठान मूवी तो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है 25 जनवरी 2023 को ऑल वाइट लाइक पूरा थिएटर्स में. Right. And so hope करते हैं कि this will be the savior of Bollywood. Bollywood का जो yes. डाउनफॉल है एटलीस्ट ये बहुत ज़्यादा promising लग रहा है मुझे तो. yes. को ये मूवी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है. एंड किंग खान के साथ जो अपीयरेंस है दीपिका पादुकोण मैम का एंड ऑल्सो जॉन अब्राहम सर का, मुझे लग रहा है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल हो. हमें तो यही फील होता है. यही आशा के साथ हम शुरू करते हैं कन्वर्सेशन में. मोस्ट प्रोबेबली क्या क्या मे बी कुछ हिडन फैक्ट्स एंड ऑल कुछ मिल सकता है इस कन्वर्सेशन में, पर्टिकुलर मे बी किस ट्रैक पे या फिर किस टाइप का कुछ पठान मूवी है या फिर कुछ भी शाहरुख खान जी का जो भी रोल है वो इसमें मिल सकता है. तो चलिए देखते हैं ये वीडियो. शुरू करते हैं आज का वीडियो गाइस. बट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल. यस, एंड आल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. या तो चलो शुरू करते हैं. यस, जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो एक बड़ा सवाल ये होता है कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, और पिक्चर बनाने वालों से लेकर के पिक्चर देखने वाले सभी लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं. इसलिए आज मैं इसी तरीके के ओपिनियंस पे आपको पैसा कमाने का एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ, और वो है ट्रेडेक्स. चाहे बात हो लेटेस्ट न्यूज की या एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स या स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों के ओपिनियन की, आप ट्रेडेक्स पे अपना ओपिनियन पर हमेशा पैसा कमा सकते हैं. इस ऐप में बहुत सारे इवेंट है एंड कुछ इवेंट्स पे ट्रेडेक्स गारंटीड प्रॉफिट प्रोवाइड करती है. ऐसे इवेंट की खासियत ये है कि आप श्योर शॉट विन करोगे और लूज करने का कोई चांस नहीं है. जैसे कुछ दिनों में शाहरुख खान की नई मूवी पठान आने वाली है, तो आप ट्रेडेक्स पे इस चीज के ऊपर बेट लगा सकते हैं कि ये मूवी थिएटर में चलेगी या नहीं. इन दिस पठान मूवी इवेंट एज यू कैन रेट द टिप्स. सो अगर टिप के हिसाब से अगर ट्रेड करते हो तो आप जीत सकते हो इजी कैश. एंड इन दिस कॉन्टेस्ट आप बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो ओनली 100 शेयर्स. इसके अलावा इस ऐप को अपने फ्रेंड्स को रेफर करके भी आप 0.25% एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम. ये सब फीचर्स के साथ ये ऐप आपका एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है. है ना कमाल की चीज. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड ऑफर 20 कूपन कोड यूज करके आप 20 रुपीज साइन अप बोनस भी कमा सकते हो. Pathaan is an easy guy, doing a lot of tough things, and I think he's naughty, he's tough, but doesn't wear it on his sleeve. He's trusting, he's honest, and I think he's very single-mindedly thinks of India as his mother. okay. I came to the film industry 32 years ago to be an action hero, but I missed the boat because they made me a romantic hero instead. I've only wanted to be an action hero. I mean, I love DDLJ and I love Rahul and Raj and all these good sweet boys. But I always thought I was an action hero. So for me, it's my dream come true. To be able to surprise as an actor, you really have to give yourself into the hands of a capable director. And I think this genre of film, nobody knows better than Siddharth. So there's not much to question. I'm working with him first time, and this kind of cinema he knows very well. So I just love the world that Siddharth makes. But when I heard Jhoome Pathaan in the car, Sid made me hear outside the studios in my car speakers and all. So and as soon as what is now fashionably called the drop comes, Jhoome Pathaan. So I think I started feeling this. You feel like that. Really? And I think Bosco did some. He was trying to make me do a lot of all that dancing, So I had to fight with him to not make me do it. I just wanted him to do a step which everyone can do with ease. Because it's that kind of song that it is dancey, but it should be like chaya chaya. It should be easy to dance to. The way the song comes in the film is also excellent. It's like all things done well now, and let's say it's a party song in the film also. We know Siddharth and his team chooses some amazing exotic locations. They were quite virgin locations for me also. I've never seen it. I've been to Spain before, but they were beautiful. I mean, there's a town square we shot the song in, which also must have been emptied for the shoot because I didn't see any shops open, maybe few. There was this place with a cliff and water coming in on the beach. It was astounding to look at. I think all those locations were quite untouched. It was really nice. It was like breath of fresh air. I'd taken my kids, so it was nice to have them there. It was really wonderful. It was like a family holiday. Holiday. I've known John since I've come to Mumbai. He's one of my first friends or first acquaintances to start with, and then turned into friendship. I've known him for years. He's very shy, very quiet, very reclusive. I've met him many times when he's doing a film or we wanting to do a film together. And this happened per chance. I was very keen he does it, and he was kind enough to accept a role where he's really a bad guy.
You know, he's a top star. He has his own franchises happening, and he's got some really cool action films happening. And then to decide to take on a film which is he's a bad guy, you know. So it takes a lot of guts. Takes a lot of confidence in your own self. But as a character, especially when you see in the Hindi film scenario, heroes don't play bad guys. I'd love to play bad guys. So I have a lot of, I gained deep respect for him. It was very nice working with him, and also I realized he's a gentle giant. You know, when we're doing action and everything, he says, no, you are, what did he call me? You are a national treasure. I will not hurt you. I can't. So I said, but you can, it's okay, you can talk to him. So he's very shy. And I had to do a lot of convincing to tell him, it's okay, you can punch me, I won't get hurt. But I think he's so proficient in action. He really helped me look nicer, you know, in body language. Many a times he would say, Shabai, just a little like this. You want to do it like this, don't bend your body, just be up and all. So it was very kind of him. And I think if you're doing an action film and a co-star like John with you, I think it's a lot to learn, especially in this genre. Lot to learn that, you know, being the star that he is, and the respect that he has for me, you know, the way the film has gone off smoothly, and it's a big challenge for someone like him. And I hope genuinely that when Pathaan comes out, the most liked character in the film is John's. I really wish, because it takes a lot of guts to do what he's done as an actor, as a star, and at his you know, space and place that he is. You need someone of the stature of Deepika to be able to pull off a song sequence like Besharam Rang, and then you know, to be able to do an action where she takes a guy and pulls him right over herself and beats him, and you believe it. She's tough enough to do that. I mean, I think she looks tougher than me in the action scenes. So, you know, that kind of a combination could have only been achieved with someone like Deepika, I think. And then this whole emotional thing. So there are 2-3 sequences in the film where you get to know why is she this balancing act of not knowing is she good or bad. And then there is a huge vulnerable side to that character. You know, being an action film, obviously we can't dwell too deep into it and keep on following that approach, because when you come to see an action film, after 10-12 minutes, you want to see action or, you know, some thrill going on. But I think there's enough for Deepika to be extremely, how do I say, likable, vulnerable in a nice way, not that because she's a lady, and very strong. So physically, she has to look like that and still feminine. You know, so it's a quite a layered character for an action film heroine, so to say. To be honest, it's been a long time since I've entertained people with a good film, so I think this one will. Yes. And it's an action film that's close to my heart. As well. All films are. And I think it's made with a lot of goodness from a lot of good people. And yeah, so I hope you enjoy it. It's larger than life. I think it's cinematic, which is the call of the day. It's film that you want to watch on a big screen. After seeing it 2-3 times on big screen, then maybe you can watch it on OTT. But before that, watch it on big screen. I think it's fun, it's happy, it's good looking, it's I think technically quite forward. Lovely locations, lovely songs, beautiful people, and I think the action is really nice. You know, many years ago, I was once driving in a car in Delhi, and I think I saw Mr. Shatrughan Sinha in a car next to mine. I have nothing to do with films. I'm, I think, in school or maybe college. And when I saw him, it looked like someone I knew. You know, I know this man. And I took it so personally to say hi to him. The cars were like this at a red light. And he was going slow, and he looked. And so, hey! You know, like, and he was very kind. He smiled. He did this. And he was, "Hey, yaar, apna." And it's always apna. You know, and I didn't think I'll be an actor. But once I became an actor, and when I realized when people see me, I have also started assuming that they think of me as their apna. And they come with, ki, "Arey apna Shahrukh." They may not know me, they may not even like me, I may not even be their favorite star. But there is a familiarity because I'm there in their houses, on the televisions, in ads, on roads, on hoardings. I'm a part of their lives, you know. So it's very difficult that it's just impossible for me to disappoint them. You know, कि अगर कोई बोले कि hey, and मैं मुंह मोड़ के चला जाऊँ. So I feel it's as simple a thing as that. So it's not I do anything great by meeting the people who've come to see me. The little kids, I'm sure their fathers have said कि come, I'll show you my favorite star. Maybe the kid doesn't even know me. But I just feel that father should not be disappointed in front of his son. Yeah.
कि पापा you said it's your favorite star but you didn't even say hi. So I think it's important. Didn't even say hi. And it's a very simple thing. It's no big deal. I think it's just my way of also showing gratitude, and I think it's my way of letting everyone know that the fact that you think I'm your own is not untrue. I am your own. You know, I don't know if I'll see them again. I don't know if we'll ever cross paths again. And as an entertainer, your job is to make everyone smile when they come in touch with you, whether it's professionally or personally. So if somebody meets me somewhere in between, which is not personal or professional, I think it's your job to make sure that if they met Shahrukh or any actor, it was good meeting him. You know, I should have entertained them for that 5 seconds. Wow. So इट वाज Amazing, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जो भी क्वेश्चन था. और सीरियसली मतलब कुछ चीज़ें जो ये मूवी के बारे में, पठान मूवी के बारे में जो भी है, कुछ मतलब हमें आइडिया लग रहा है, अभी जो फील हो रहा है वो पता चल रहा है कि लाइक दीपिका मैम का जो कैरेक्टर होने वाला है बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने वाला है इसमें. मतलब एक नॉर्मल टिपिकल जो बॉलीवुड का मूवी मोस्टली रहता है, फीमेल कैरेक्टर को मतलब क्या बोलते हैं उतना ज़्यादा शोकेस नहीं मिलता है, बस एज ए कैरेक्टर है, एक चाहिए एक रोल, फीमेल रोल चाहिए, उस टाइप का रहता है. बट बदला है. तो अब मुझे लग रहा है इसमें दीपिका मैम का मतलब एक स्ट्रॉन्ग रोल होने वाला है. यस, एंड आल्सो एज वेल एज जॉन सर का, जैसे कहे मतलब वो नेगेटिव रोल पे ही है, शाई, बहुत ज्यादा जेंटलमैन एंड डाउन टू अर्थ. बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह भी देखे हैं उनका. जब वो एक्शन पे आ जाते हैं, जब नेगेटिव कैरेक्टर पे आ जाते हैं तो सबको तोड़ फोड़ करके रख देते हैं. उनका कैरेक्टर ना मतलब ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बहुत डिफरेंट है. वो विलेन में भी तो वो थे ना, वो उसमें भी तो वो नेगेटिव कैरेक्टर थे. तो मतलब ही इज अमेजिंग मैन. एंड ऑफ कोर्स हमारा जो शाहरुख खान जी है वो उनका तो क्या ही कहना. मतलब वो ये मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है ये किंग खान के बारे में, कि ये जब भी बात करते हैं ना लोगों के बारे में बहुत अच्छा चीज़ ही बोलते हैं. हमेशा सबको अपने से आगे रखना, ये भी बहुत बड़ी एक चीज़ है, बहुत बड़ा कैरेक्टर है जिसको हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए. क्योंकि देखिए हम अपने बारे में तो बहुत चीज़ बोल ही सकते हैं कि हम ये किए, वो किए, हम गिरे, हम कितना मेहनत किए, ये सब बोल सकते हैं. बट कौन इतना बोल सकते हैं कि हाँ हम उनके साथ काम किए, मेरा तो मतलब किस्मत ही अच्छा है कि मैं उनके साथ काम करके मुझे अच्छा लगा कि दीपिका मैम ये मतलब शी इज़ द ओनली वन हु इज़ वेरी मच फिटेड फॉर दिस कैरेक्टर. जैसे वो बोले, प्रेस किए, जॉन सर को प्रेस किए, फिर शत्रुघ्न सिन्हा का जो सर का जो एग्जाम्पल दिए कि वो सबको अपना अपना करके ये चीज़ मेरे अंदर है. वो सिनेरियो सुनकर मुझे याद आ गया जब मैं गोविंदा सर से मिला था एक बार कोलकाता में. मतलब एक्सीडेंटली मतलब मिल गए थे, मतलब एक मॉल में गए थे, वो भी आया था, वो पैंटालून्स था, सिटी सेंटर 2 में पैंटालून्स में हम लोग ऐसे घूम रहे थे फ्रेंड लोगों के साथ है. तो देखे अरे ये पहचाना लग रहा है, अरे ये तो गोविंदा सर. तो ऐसा ही सिचुएशन हुआ था मेरे साथ भी. तो वही मतलब अपने फेवरेट स्टार को ऐसे करके पहचानना चाहिए ताकि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी बेझिझक इंट्रोड्यूस कर सके कि देखो ये है हमारा फेवरेट. और ये एक अच्छा चीज बहुत अच्छा लगा कि अगर स्टार भी हैं तो एटलीस्ट अगर उनके जो फैंस हैं वो अगर मिल रहे हैं, आ रहे हैं पास में, तो बहुत लीनियंटली बात करना चाहिए ताकि उनके दिलों में भी प्यार वो बना रहे. नहीं तो क्या मतलब उनके लिए तो ये लोग आगे, उनके लिए तो ये लोग ये मुकाम अचीव किए हैं. लोग तो अकेले नहीं किए, सपोर्ट से, हम ऑडियंस के सपोर्ट से ही ना हुए. तो उनके साथ हमेशा जैसे मतलब फैमिली की तरह ही जुड़े रहना चाहिए. तो दिस इज अमेजिंग एक्चुअली, क्योंकि हर बंदे से ऐसा नहीं, जो ये भी बता रहे हैं कि कब फिर से लाइन क्रॉस करेंगे पता नहीं है, राइट. लेकिन दिल में वो जो स्थान है ना वो एक बन जाती है. करेक्ट. बहुत अच्छा चीज है. और देखते हैं ये फिल्म ऑफ कोर्स नो डाउट जो भी बता रहे हैं बिहाइंड द सीन, मतलब बिहाइंड द जो हमें नहीं पता वो फैक्ट्स वगैरह जो भी था वो बहुत अच्छा लग रहा था. और आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी. यस, वी आर सो एक्साइटेड फॉर दिस मूवी एंड वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडिंग गाइस टू गो एंड वॉच दिस मूवी इन द थिएटर्स. ये तो बोले कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी आ जाएंगे, देख सकते हैं, लेकिन बिग थिएटर में, बिग स्क्रीन में देखने का मजा ही कुछ और है. एक्शन मूवी है ना, इसीलिए आई एम जस्ट टेलिंग द सेम थिंग. बड़ा स्क्रीन में देखने बड़ा स्क्रीन में अलग ही मजा है. एंड क्या होगा अभी समझ ही सकते हैं. 3 मतलब हॉट चेहरा देखने को मिलेगा, 2 हैंडसम हंक एंड 1 ब्यूटीफुल लेडी, गॉर्जियस लेडी. तो
बहुत शानदार मूवी होने वाली है। तो बस यही था कॉन्वर्सेशन विद किंग खान हमारा। एक चीज मतलब बंद करने से पहले, मतलब ओवर करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन ऐसा लग रहा था कि हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे। ऐसा फील हो रहा है कि सामने बैठे हुए हैं, He was so generous, man. Yes, एकदम yes. पोलाइटली सारा चीज हमें बता रहे हैं। Yeah, I was constantly smiling. I was deep into the video. Even you also. Like, आप समझ ही सकते हैं कि लग ही रहा था कि हम लोगों से ही बात कर रहे हैं, ऐसा फील ही हो रहा था। Truly, man, amazing. So yes, that is it for today's video. I hope you have enjoyed our reaction. If you do so, please don't forget to subscribe and also click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. And also don't forget to download the TradeX app from the link given in the description, and also please apply my referral code, that is offer 20. So see you in our next video. Till then, bye.